Hello and welcome to this introductory presentation on the Disaster Preparedness and Response Team. DPART is an independent social enterprise promoting community-based disaster risk reduction and community emergency response team training in Pakistan. With little or no warning, disasters and emergencies can happen. Your local government's ability to respond to these incidents can be quickly overwhelmed. Often it is at times like this the community impacted by the disaster are the first to respond, and that initial response can mean the difference between life and death. To find out just how simple disaster preparedness knowledge can help save lives, let us go back to the year 2004. The location is the Indian Ocean. At approximately 7:59 a.m., a powerful seaquake strikes off the coast of Sumatra, creating a devastating tsunami. At this time, a 10-year-old girl, remembering her lessons at school, helped save the lives of 100 people. This is her remarkable story. If you didn't know her, you'd think 10-year-old Tilly Smith was just an ordinary schoolgirl. She enjoys all the things ordinary schoolgirls do. She lives an ordinary life and goes to ordinary lessons here at Daneshill School in Oxshott in Surrey. But on the 26th of December 2004, Tilly Smith was caught up in an extraordinary situation and reacted like lightning to save the day. She and her family were on holiday in Phuket in Thailand when the Asian tsunami struck. Most people failed to spot the first warning signs in the water, but Tilly had just studied tsunamis in school. I remembered because I had been taught it in the geography lesson, and it was the exact same froth, like you get on a beer. It was sort of sizzling. Just 2 weeks earlier, Tilly's geography teacher, Andrew Carney, had taught them about the early warning signs for a tsunami and how important it is to act quickly. From the time you suspect something's wrong, then it's crucial to get to higher ground and to get away from the seaside. Even if the water is not that high, the power of the waves could crush and drag you down and drag you away. I said there's definitely going to be a tsunami, and my mum didn't believe me, she didn't react. And so she just kept on walking, and my dad sort of believed me, and Holly, my sister, was getting really scared, so she ran back to the pool. And then my dad went back with her. And then I said, right Mum, I'm definitely going. There is definitely going to be a tsunami. And she just, bye then. So I went back, and she was sort of reacting a bit more when I had gone. And so she went back to see if I was okay. And then the minute that she had come back, the water started coming up the beach. The tsunami wreaked havoc across Asia, killing over 270,000 people and causing massive destruction to property. Large parts of Phuket were damaged, but with such simple but crucial information, Tilly managed to save the lives of all the people on her beach. Well, I told my dad, and my dad told the security guards, and then the security guards told the people on the beach, because there was quite a few families on the beach, just in the water. Some reports claimed Tilly saved over 100 lives that day, but she says the real hero is her geography teacher, who saved her life and those of her family. If it wasn't for Mr. Carney, then I'd probably be dead, and so would my family, so I'm quite proud that he's taught me that in the time, that it was. The power of education is the difference between, I suppose, success and failure, life and death in this case, and there is nothing to substitute it for. Without education, I think people are powerless. With education, as can be seen here, they are very powerful in terms of directing their own lives. According to the UN ISDR, children can be very effective messengers and can help teach the older generation. If Tilly hadn't been there, her mother may easily have died. My mum didn't realise
because she wasn't taught about tsunamis when she was younger, and she didn't realise what a tsunami was. She didn't even know that word existed. So I think it's really good to actually know the word and be taught it. Tilly agreed to be interviewed for the UN International Strategy on Disaster Reduction because she hopes her experience may help spread the word in other countries about the importance of raising awareness. Though her life is now back to normal, she still thinks of those who died in the tsunami and says one day she would like to return. I sort of felt guilty that I had survived and all those people hadn't. I'd like to go there again just to finish off our holiday, and I'm quite proud of myself that I knew what was happening. It's hoped when the next time comes, more people will react like Tilly. When the tsunami occurred, Tilly was ready. Her knowledge and quick thinking helped to save the lives of her family and those around her. The question is, what will you do in the event of an emergency or disaster? DPART has been helping to train communities and volunteer teams since 2005. We've provided training to over 1,500 people all across Pakistan entirely free of cost, and distributed over 10,000 free books on school safety to children across Pakistan. We are a small organization with big ambitions, and this year we want to do more. We want to establish a pilot volunteer search and rescue team within Islamabad and Rawalpindi. Join us to make this dream a reality. Here is why our work is so important. अक्टूबर जैसा कि पूरी दुनिया इससे बाखबर है, लेकिन यहाँ पे मैं आंखों देखा आपको हाल बताता चलूँ। वो ये था कि जैसे ही ज़लज़ला हुआ उस वक्त ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या हम करें। तो महाजरा कुछ उस वक्त मैं स्कूल में था, अपने 8th-9th क्लास में मैं था। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो वहाँ पे कुछ भी नज़र आने के लायक नहीं था। टोटल के मकान जो थे वो गिर चुके थे, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये थी कि हम किस तरह सर्च एंड रेस्क्यू करें। हमें वो चीज़ पता नहीं थी। मेरे स्कूल के साथ एक स्कूल था, 3 मंजिला स्कूल, वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका था। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक बंदा बदान लेके, हथौड़ा इसको हम बोलते हैं, वो लेके मारने को शुरू हुआ था। तो नीचे से आवाज़ आई थी, खुदा के लिए हथौड़ा हम पे ना मारो। हम नीचे इस जो आप मारते हो तो हमें इससे और दर्द महसूस होता है। तो उस वक्त ये सिचुएशन थी कि हर बंदा ये सोच रहा था किस तरीके से निकालें किसी बंदे को, अपने करीबी रिश्तेदारों को। लेकिन हम अपनी ये देखें, हमारे पास वो टेक्निक नहीं थी कि हम प्रॉपर टेक्निक से उनको निकाल पाएँ। हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं थे कि जिनके ज़रिए से हम निकाल पाएँ उनको। तो इस वजह से हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मुज़फ़्फ़राबाद में कम से कम कहा जाए, वैसे सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो लोकल रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक कम से कम 20 से 25 हज़ार बंदे जो थे इससे मुतासर हुए, इंतहाई हद से भी ज़्यादा। जब ज़लज़ला आया उस वक़्त मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि मेरे पास ये बहन का बेटा जो था वो बहुत छोटा था। उसकी वजह से मैं नमाज के बाद सो जाती थी कि अगर ये मैं कोई काम करूँगी तो ये जाग उठेगा तो फिर मुझे काम नहीं करने देगा। तो उसको मैंने सुलाया और मैं बर्तन धोने बैठ गई। तो अभी मैं आखिरी पीस बर्तन का धो रही थी कि ज़मीन नीचे से ऊपर को उठी। हमने को पता नहीं, फिर अल्लाह मियाँ के हुक्म से ही, लेकिन ये हुआ कि ज़मीन ऊपर को उठी और मकान एकदम मेरे ऊपर आ गया। तो मेरे पास मेरे बच्चे तैयार हो रहे थे स्कूल जाने के लिए, नैयर निकल चुका था, तो दूसरे छोटे बच्चे तैयार हो रहे थे ना। एक बच्चे का मुझे याद है कि उसने एक जूता और सॉक्स मेरे सामने पहना, दूसरी सॉक्स पहनी और जूता उसने उठाया तो मकान ऊपर आ गया। तो जब मकान ऊपर आ गया तो मैं दब चुकी थी। फिर बच्चों का यही था कि हमारी माँ, उनको यही था कि हमारी माँ मार चुकी है। और हमारे पूरे ख़ानदान में अगर देखें तो 55 है। वहाँ तो मैं कहती हूँ चंद लोग बचे हैं, वहाँ तो सभी लोगों की डेथ हो गई। 65 लोग
मेरे ससुराल के पहुँच गए। ज़लज़ले के दौरान उसी दिन जिस दिन ज़लज़ला हुआ तो हमारे प्रिंसिपल साहब हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आपकी जान तो बच गई है लेकिन आपके साथ का जो स्कूल है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, आप उनकी जान बचाएं। तो चूँकि मैं एक स्काउट था बेसिकली और हमारा ये वादा था कि हम दूसरों की मदद करेंगे, तो उस हवाले से ये था कि एक तो मेरे शौक़ था कि मैं लोगों के काम आऊँ, तो वो मेरे ख्वाहिश वहाँ पे पूरी हुई। और सिचुएशन कुछ यूँ थी कि मेरे घर वाले मुझे मेरे स्कूल में ढूंढने के लिए आए हुए थे और मैं उनको रेस्क्यू कर रहा था। मेरी पूरी यूनिफॉर्म जो थी स्कूल यूनिफॉर्म वो ब्लड से भरी हुई थी। तो उसके बाद ये था कि ये तो मैंने 8 से 10 बंदे रेस्क्यू किए, जिस तरीके से भी किए वो बताने लायक है नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। मैंने खुद भी बहुत, अभी जब मैंने ये ट्रेनिंग ली है तो मुझे पता चला कि मैंने कितने गलत तरीके से उनको रेस्क्यू किया है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा वार्ड बिल्कुल शहर से थोड़ा सा हट के आ रहा है, तो उधर चूँकि किसी किस्म का हॉस्पिटल तो दूर की बात है, वहाँ पे छोटी डिस्पेंसरी भी नहीं है। तो ये जो बेसिक टेक्निक्स हैं, चूँकि आप देखें कि सबसे पहले जब कोई भी किसी किस्म का डिज़ास्टर आता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड करती हैं कम्युनिटी करती है, कम्युनिटी के इर्द गिर्द के लोग। अब अगर मेरे दोस्त या रिश्तेदार इर्द गिर्द रिश्तेदार है, उससे अगर मेरी सालों पुरानी दुश्मनी भी है, लेकिन किसी के ज़लज़ले में सबके सामने मिसाल है, अगर किसी की 100 साल पुरानी दुश्मनी भी थी, सबसे पहले वही पहुंचा जो कम्युनिटी में मौजूद था, मोहल्ले में मौजूद था। तो यही चीज़ है कि कम्युनिटी के लोग ही पहले उसको करते हैं, हेल्प करते हैं किसी किस्म का अगर मामला आ जाए। तो हमने उधर भी बताया था कि ये इस तरह की ट्रेनिंगें अगर वक्तन फ़वक्तन होती रहें, हमारे जहन भी खुले रहेंगे, तो हमारी यादाश्त में भी रहेंगे कि हमने ये काम करने।